आज के बाद no sorry, only thank you. What does it mean? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने आज के बाद सॉरी नहीं कहना, आपने क्या कहना है? थैंक यू। मीन्स सॉरी रिप्लेस हो जाएगा थैंक यू के साथ। ओके, मीन्स जहाँ पर आपको कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि आपको सॉरी करना पड़े, तो आज मैं आपको बताऊंगा वहाँ आपने सॉरी नहीं कहना, वहाँ पर आपने थैंक यू कह के बात को और भी अच्छे अंदाज में बयान करना है। तो कैसे होगा? Let's start. So, welcome to my channel, English and German with Ifi Khan. Alright, so sorry नहीं कहना, like for example, आप लेट होते हैं, जैसे sometime we are human, we can be, so लेट होते हैं तो हम कहते हैं I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. अच्छा, इसको I am नहीं कहना, one word, say one word, am sorry for being late. अब sorry नहीं कहना आपने क्या कहना है? Thank you. आपने क्या कहना है? Thank you for waiting for me. Thank you for waiting for me. Okay, so next, कौन सी सिचुएशन है? Like someone is very sensitive. So कोई बहुत सेंसिटिव है तो उसको फील होता है, राइट? क्या वो मीन्स क्या उस सिचुएशन में हम अक्सर कहते हैं आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो सेंसिटिव। सो आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो सेंसिटिव। सो ये नहीं कहना, आपने क्या कहना है? थैंक यू फॉर बीइंग एक्सेप्टिंग ऑफ मी। थैंक यू फॉर बीइंग एक्सेप्टिंग ऑफ मी। गुड, ओके, सो आपका बहुत शुक्रिया मुझे एक्सेप्ट करने का। ओके, सो लाइक एक और तरह की कंडीशन होती है जहाँ पर यानी कोई इशू खड़ा हो जाए, मीन्स समथिंग मैस्ड अप, तो वहाँ पर हम कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम ऑलवेज मैस अप, राइट? आई एम सॉरी, आई एम ऑलवेज मैस अप, मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से मामलात ख़राब हो जाते हैं, पंगा पड़ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, राइट? तो वहाँ पर भी आपने क्या कहना है? वहाँ पर कहना है थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंस व्हेन आई मेक मिस्टेक। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंस व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, राइट? अच्छा, इसी तरह एक और सिचुएशन होती है जहाँ पर आपने किसी से लाइक हेल्प लेनी है, बट यू आर बीइंग हम्बल, कि आप उनसे हेल्प लेने के लिए आप शो कर रहे हैं फॉर बीइंग हम्बल। लाइक व्हाट? लाइक यू से आई एम सॉरी दैट यू हैव टू हेल्प मी सो मच। आई एम सॉरी दैट यू हैव टू हेल्प मी सो मच। मुझे माफ़ कीजिए, आपको मेरी काफ़ी मदद करनी होगी। तो इसी तरह इसको चेंज करना है किससे? थैंक यू फॉर डूइंग मी अ फेवर। थैंक यू फॉर डूइंग मी अ फेवर। आपका मुझ पर एहसान करने का बहुत शुक्रिया। ओके, सो लाइक एक और सिचुएशन होती है, जैसे कोई बंदा बहुत टॉकटिव है, राइट? So he talks too much or she talks too much, तो उसको फील होता है कि मैं शायद बहुत बातें कर रहा हूँ या कर रही हूँ। So वहाँ पर इस सिचुएशन में आप कहते हैं I'm sorry for talking so much. I'm sorry for talking so much, right? तो इसको चेंज किससे करना है? Thank you से। Thank you for listening to me. Thank you for listening to me. आपका शुक्रिया मुझे सुनने का। यानी आप सॉरी करने की बजाय शुक्रिया अदा करके आप you show yourself well civilized, well cultured, और आप थैंक यू अदा करके यानी आप उल्टा दूसरे आदमी को अच्छा फील करवा रहे होते हैं। अगर आपने ऐसी सिचुएशन हो जहाँ आपने मीन्स there is no any other way, कोई रास्ता नहीं है, आपने सॉरी कहना ही है, ओके?
तो सॉरी कहना ही है तो फिर भी सॉरी नहीं कहना, तो क्या कहना है? सॉरी कहना है बट एक अच्छे अंदाज में, लेकिन सॉरी वर्ड यूज नहीं करना, सॉरी वर्ड यूज नहीं करना। लाइक आपसे कोई मिस्टेक हुई माजी में, पास्ट में, तो यू फीलिंग गिल्टी, यू वांट टू से सॉरी, सो आप क्या कहेंगे? I owe you an apology. I owe you an apology. What happened yesterday? I owe you an apology. What happened yesterday? Right? मैं माफ़ी चाहता हूँ जो कुछ कल हुआ. Right? It means there is something wrong. इसी तरह there is a very tense situation, your intention, something happened, so you ought to take responsibility. Then you say, I take full responsibility. I take full responsibility for my actions, or for my blunder. I take full responsibility for my action or blunder. Right? कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी गलती की या अपने अमल की. ओके, लाइक इसी तरह कोई ऐसी सिचुएशन है कि यू डिड मिस्टेक अनइंटेंशनली, आपसे गलती हुई गैर इरादी तौर पर. राइट? आपने जानबूझकर गलती नहीं की, हो गई. ओके, सो लाइक जैसे आप कहीं से गुजर रहे हैं एंड somebody is fighting and there is a crowd and you enter there and you face some problem, and then you come back to the home and you say to your parents, it was wrong of me, it was wrong of me, या फिर आप ये कह सकते हैं it was wrong on my part. Right? Means मुझसे गलत फैसला हुआ, ये मेरी तरफ से गलती हुई. Okay, so इसी तरह like you are being careless and you're accepting, right? So then you say, it was careless of me, it was careless of me, या फिर आप कह सकते हैं it was thoughtless of me, it was thoughtless of me. In the same way, like sometime we want to write, हमने किसी को सॉरी लिखना है. ओके, इन अ लेटर और इन ईमेल समवेयर. सो जब हम लिखते हैं तो उस टाइम हम जो यूज़ करते हैं वर्ड आई सिंसियरली अपोलोजाइज, आई सिंसियरली अपोलोजाइज. ये बोलने से ज़्यादा रिटन में यूज़ होता है. आई सिंसियरली अपोलोजाइज बोलने से ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? रिटन में यूज़ होता है. ओके, सो लाइक आपसे कोई मिस्टेक हुई और आपके साथ जो आदमी है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको इजीली माफ़ कर देगा, तो आप कह सकते हैं आई होप आई कैन बी फॉरगिवन. आई होप आई कैन बी फॉरगिवन. मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे माफ़ किया जा सकता है. राइट? For doing that, this, that, means कुछ भी. I hope I can be forgiven. Okay, so इसी तरह आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है किसी चीज़ का, तो आप कह सकते हैं I deeply regret. I deeply regret. Okay, so like आपने कुछ गलत फैसला किया माजी में, तो आप कहते हैं I shouldn't have done that. मुझे वो नहीं करना चाहिए था. I shouldn't have done that. मुझे वो नहीं करना चाहिए था. अच्छा, मीन्स क्या नहीं करना चाहिए था? लाइक जैसे आप कहते हैं कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी. I shouldn't have spoken with him. Right? मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए थी. लाइक आई शुडंट हैव गॉन देयर. मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था. अच्छा, ये शुड पर हमारा बहुत ही डिटेल लेक्चर आएगा आगे, सो डोंट मिस दैट लेक्चर. ओके, सो होप यू हैव लर्नड अ लॉट एंड कीप इन टच.
and the previous about the previous lectures, you can find the links in the below in the description, right? So hope you have subscribed and share it too with your friends and family. Thank you very much.